Hello guys, so let's start with the fourth question. That is VLOOKUP. But before starting with the question, let us revise the lookup functions. So what does lookup function mean? The word lookup itself means to look up a value. ठीक है? So lookup function basically क्या करता है? हमारे पास एक original table होता है. Okay? Original table से हम we need certain values separately. ये कहाँ पर use होता है? In business scenarios, there are multiple rows and columns in an Excel sheet. So when we want certain names, for example, यहाँ पर संजू, राम, अजय and पंजू है. इनमें से we just want the data of संजू and राम. यहाँ पर तो data छोटा है, so we can directly copy paste. But when the data is of thousands and thousands of rows and columns, we cannot do the same. So in this case, we use a lookup function, which helps us to find the data quickly. And this particular data is related with VLOOKUP. Why VLOOKUP? Because here the data is in the vertical format. रोल नंबर्स वर्टिकल फॉर्मेट में है, इंग्लिश के मार्क्स वर्टिकल, हिंदी के मार्क्स वर्टिकल, मैथ्स वर्टिकल, ज्योग्राफी वर्टिकल एंड नेम वर्टिकल, right? And that is the reason why we use VLOOKUP function here. If that same data was horizontally, for example, name यहाँ पर संजू, राम, अजल, पंजू, रोल नंबर यहाँ पर 1 3 2 5, इंग्लिश यहाँ पर और मार्क्स ऐसे horizontally, then we would have used HLOOKUP. But as the data is in vertical format, we use the VLOOKUP function to find the lookup value. The syntax for the VLOOKUP function is VLOOKUP bracket open lookup value. Lookup value is nothing but the data in the on the leftmost column of the original table. VLOOKUP functions can only be found from the right or the leftmost part of the original table. ठीक है? So this is a lookup function. तो संजू यहाँ पर भी है और original table में भी है. तो संजू related data will be find in the original data moving from left to right. Let us take an example. Is equal to VLOOKUP syntax lookup value. Lookup value क्या मैंने बोला? संजू है. Table array. Table array क्या होता है? Table array means nothing but the original table. Original table ये है. And always remember to freeze your original table का range. And how we do this? Table array select किया, उसके बाद F4 dollar signs आया. That is you've added fixed values or freezed the range. Then उसके बाद column index number. What is column index number? What do we want to find here? Roll number. In the original table, roll number कौन से column में है? This is the first column and this is the second column. The original table, the roll number is in the second column. So we write 2 here. Next, approximate match or exact match. We want an approximate match. So we put 0. Bracket close, enter. So we got the exact same roll number here. You can drag downwards in the lookup functions, but avoid dragging sidewards. Sometimes you'll get the answer, but majorly you'll get error. So what you want to do is every time you want to enter a data into new column, use and write the VLOOKUP function. VLOOKUP, lookup value remains the same, that is Sanju. Table array remains the same, that is the original table. Select किया, उसके बाद freeze करना है F4. Column, table column number. यहाँ पर क्या है? इंग्लिश का डेटा फाइंड करना है. ओरिजिनल टेबल में इंग्लिश कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम. सो 3 ब्रैकेट approximate match, that is 0 rows, enter. Done. English का exact मिला? Yes. Then we can drag. Same for Hindi. Is equal to VLOOKUP lookup value संजू. संजू का रिलेटेड डेटा चाहिए ना हमें. So संजू table array the original data, freeze it, column index number, हिंदी कौन से कॉलम में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम, approximate match, goes enter. Done. Okay, so I guess you have understood what the VLOOKUP function or lookup function exactly is. So let's move to our journal question. This is the journal question.
The data set is about teams, football teams generally, their countries, if they have played in Champions Leagues or not, the total number of games played and the points earned. इतने सारे डेटा है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल 6 कंट्रीज या फिर 6 टीम्स का डेटा है हमारे पास. बट वी वांट टू फाइंड डेटा ओनली रिलेटेड टू 3 टीम्स. So what we use is VLOOKUP. Why? Because the data is in the vertical format. You should understand by looking at the data if we want to, if we should use VLOOKUP or HLOOKUP. The data here is in the vertical format, so we use VLOOKUP. So is equal to VLOOKUP. Lookup value क्या है? Bn, which is the right most column का value. Bn यहाँ पर भी है, original table में भी है. Okay? हमने Bn select किया, कॉमा टेबल आरे में you select the original table. सेलेक्ट किया रेंज, फिर फिक्स करते हैं हम वैल्यू बाय F, प्रेसिंग F4. कंट्री फाइंड करना है. कंट्री कौन से रो में है? कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम में है. सो 2 कॉमा अप्रोक्सीमेट मैच इज नथिंग बट उसके रिलेटेड डेटा हमें देगा. रोज एंटर. परफेक्ट. बेन जर्मनी का है. यस, बेन इज जर्मनी. लिवरपूल एंड आर्सेनल. लिवरपूल England, Arsenal, England. Perfect. Next, Champion Leagues. Same formula. We look up value BN, look up table. We look up values BN, look up table. There's this entire table. We freeze it. और चैंपियंस लीग कौन से कॉलम में इन द ओरिजिनल टेबल? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम. सो 3 अप्रोक्सीमेट मैच, एंटर. यस. ओके. ड्रैग फॉर रेस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स. गेम्स प्लेड फाइंड करना, सेम. लुकअप फंक्शन यूज करेंगे. लुकअप वैल्यू रिमेन्स द सेम, बेन. उसके बाद टेबल आ रहे ऑल्सो रिमेन्स द सेम. Next, column index number. Games played is on which column in the original table? First, second, third, fourth column. Approximate match. Sorry, मैं freeze करना भूल गया तो select करेंगे F4. Enter. Done. Points earned में same. Lookup value remains the same. Comma. Select the entire table. Freeze it. Comma. Column index number. Points earned कौन से column में है? Last column. First, second, third, fourth and fifth column. 5, comma 0. Enter. Done. And this is the solution for the fourth question. And for writing the steps, you will follow the similar way in which you have written the first 3 practical questions. That is, in the cell H2, that is ये cell का the address of this cell. In the cell H2, enter the following formula. ये लिख के you copy paste the formula here. And next you write drag downwards for the rest of the teams. Then दूसरे सेल में जाओगे. That is I2 enter the following formula. Next J2 enter the following formula. K2 enter the following formula. But you might be thinking, what if we can enter every data without entering the formulas again and again? Yes, there are ways in which you can enter the data, but at the beginner level or the starting level or intermediate level, we learn by only creating the formula every time we change a column. So this is enough for now. Okay. Thank you.